Good afternoon, students. Our experiment name is to find out the critical resistance and critical speed, and we have to plot OCC of DC shunt generator. Basically, in case of shunt generator and separately excited generator, the process and say all the parameters which are have to be determined are quite similar, or say the characteristics of shunt generator and separately excited generator are near equal or may same. So so in lab we are doing actually the OCC characteristics of a separately excited generator, and in previous class we take all the readings, and after that we have to find out the critical resistance and find out the critical speed. In the previous class we have taken the readings, and after that we have to make a graph of OCC. Have anyone made it? I already provide you the reading in Google Classroom. So Ayush, have you made the graph? Asgar, Jishan, Ayush, am I audible? Yes, sir. Have you made the graph of OCC? Yes or no? No, sir. No, sir. Anyone? Asgar, Praveen, Sumiran, Jishan, Deepak, have you made the graph? No one to it. No one to it. Okay. So first we see the video again. Then after that, and first we see the process by which we have taken all the readings. So go to the video. Ask them to draw the open circuit characteristics of DC machine and find the critical resistance from that line. First, we have to provide mechanical energy by DC generator so that we can get the electric energy. Actually, we are delivering the mechanical energy from an induction motor, which is basically AC type motor. Uh, from that motor, we provide the mechanical energy to the DC generator, and first I make the connection of induction motor. This is basically a squirrel cage induction motor, and this is
three-phase induction motor. So we have to provide first three-phase, and the induction motor is started by a Doll starter. So first we have to make a connection for induction motor. This is basically induction motor. We have to provide three-phase supply because this is a three-phase induction motor, and the green one is DC generator. And we operate the DC generator in separately excited mode because to control the field current in separately excited mode it is easy than the shunt type. And this is the representation of armature, and we have to add a voltmeter on the two terminal of armature. The voltage is no load voltage, so it is actually generated voltage, and we have to provide the field current by which we can produce uh, voltage. First, make the circuit of field. From the positive terminal of supply, we connect a variac, that is variable resistance, and from that we connect a ammeter in series. Then we provide that terminal to the field, and we have to connect the negative terminal of supply with field FF terminal because we are making a connection from the positive terminal of supply to the F through a ammeter and a variable resistance. So after completing the circuit, we make a negative terminal of supply with FF, and after that we have, we have to complete the armature connection. We have to just provide a voltmeter on armature supply because we are performing the OCC test or open circuit test, so there is no load connect on armature. And with the help of tachometer we have to take the reading of speed, in which speed the system will running. Ayush, am I audible? Yes, sir. Now tell me, before we performing the test, we have to make a consideration, or say we have to make a parameter such that before performing the test we have make a constant, or say there is a condition by which we have to perform the OCC test. What is the condition to perform the OCC test? Speed of the armature should be constant. The speed of the Capital R. armature should be constant. Good. So is the speed is constant or variable? With the help of a tachometer we can easily check because the tachometer
show us the reading of how much the speed of the system. So by taking the reading of speed after every interval, we say that there is a constant speed which we are providing to the system, and after that, after providing a constant speed, we have to change the field current and take the reading. We have to take the reading how much voltage is produced corresponding the field current. So first, see in the video, we don't provide the field current because the meter reading of ammeter reading is zero, but we get a voltage after providing the mechanical energy to the DC generator. Though there is no field current, but we got a reading of voltage. Tell me why, or what is the reason behind it? What is the reason behind it? Though we are not providing the field current, but after providing the mechanical energy, we got a voltage reading. What is the reason behind it? So due to the residual flux. Due to the residual flux. And why the residual flux is created? So it was created to start. Why is there a residual magnet in DC generator? What is the reason? So for self excitation. Due to the excitation. Which kind of supply, if we connect, then the residual magnet is created? So DC. DC. And if we provide AC, what will happen? Is there any residual magnetism on field? No, sir. No. Then what will happen? And you say, what is the properties that call? What is the name of that property? If we provide AC, So flashing. no, this is not flashing. The flashing is the process by which we can excited the DC generator when the DC generator lost its residual magnetism. But if we provide AC supply to the field, what will happen? Is there any residual magnetism, or you can say there is loss due to hysteresis? What will happen? So there will be loss due to hysteresis. There is a loss due to hysteresis. Good. That means if we provide AC supply, there is loss due to hysteresis, and if we provide the DC supply, then there are some residual magnet create on that field coil. Okay. And due to the residual magnet, or say due to the residual field, we got a voltage reading at no load, and no load, and after providing the zero field current. What is the reading at that time of field ammeter? At that time, the field current is zero because the meter will showing the reading zero. After switch on the supply,
After switch on the supply and increasing the voltage of field supply, we have provide we have provided a field current of 0.02 ampere, because what is the smallest division in that ammeter? What is the smallest division, and how we calculate the smallest division? Ayush, what is the smallest division? 0.26. 0.02. In which It procedure depends we on calculate it? What is the procedure of calculation of smallest division? Ayush, Manish, Risham, what is the procedure? The calculation of smallest division. a range divided by number of divisions. The range from 0 to the next reading, and first we have to see the 0 reading, then first we have to take the 0 reading and the next reading, and the next reading is zero point 0.2, and we have to count what are the numbers of division, and here the division number is 10, so the smallest division is 0.02, because in between 0 and 0.2 there are 10 divisions, so the smallest division, the value of the smallest division is 0.02. And in case of voltmeter, the next reading after 0 is 60, and the division are 10, so the smallest division is for voltmeter how much? Jishan, Jishan, in case of voltmeter, the next reading after 0 is 60, and there are 10 divisions in between 0 to 60. Then tell me what is the smallest division? Deepak, 6. 6. Now in this process we have to just increase the field current from 0.02 to 0.04 and measure the speed. What is the speed at that time? 1492, and the speed of that system is always nearwood constant, because the speed range is 1491 to 1.93. So we can say the speed is constant, which will provide by the induction motor. After making the speed constant, we are increasing the field current and taking the voltage reading, which is basically no load voltage.
and in this process we got the readings. And what are the readings? This is basically nameplate. This is basically nameplate of the DC generator. Though it is written here the motor, but we know that in which mode we are operate that machine. This is the DC generator because we are operating this machine as a generator mode. We are providing the mechanical energy and getting the electrical energy. So this is a repetitive process. We have to increase the current by one division, and then we have to take the reading of speed, and then we have to take what is the voltage generated at that time. Next, we have to increase the value of field current. Then we have to check whether the speed is constant or whether the speed is differ. So we take the rotation reading and then the voltage reading, how much voltage is generated due to the corresponding field current. This is basically a repetitive process. And what is the or what should be the final value of the ammeter in this system or say in this experiment? Do you know, Manish? What should be the final reading of ammeter for this experiment? And how actually we got that value, or you can say from where it is written, how much value can or how much current maximum we provide to the field? What is the name of that सर एमीटर में लिखा है सर फाइनल में. ammeter? No, I'm asking you that how much the value of current should be maximally provided for the field, or you can say how much the voltage is provided maximum to the armature, or say you can also say the field where it is written. What is the name of that plate? कहाँ लिखा होता है? सो जनरेटर के ऊपर. उसे क्या कहते हैं? What is the name of that plate? The name of that plate is name plate. This is called name plate, where all the rated values are written. That means how much we can provide maximum value of voltage, how what is the maximum value of current to the armature to the field, and what should be the maximum value of speed of that machine. All these data are written in
nameplate. So from nameplate we can conclude that the maximum field current should be 0.28 for this experiment, or say for this machine. The value is written on the nameplate of that machine. So uh, I'm forwarding this video because and now we have reached to the final point, and after that we are doing such things at the time when we start, where we have started, we have to go back that point. So after completing the experiment, we have to return the machine in its first position, where we, from where we started. So from this experiment we got actually a reading. What are the readings? I already provide this reading in Google Classroom. So we have to plot this reading in a graph paper. First, consider this axis suppose this is
What should be the parameter in x-axis to plot OCC? Field Yes, current. yes. What is the parameter? Field current. Basically, IF. Hmm. What is the unit of current? What? Ampere. 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 And what is the name of the parameter of y-axis? Voltage. What is the full name of that voltage? No load voltage. No load voltage. Or you can say generated voltage. Generated. And what should be the unit? Volt. What is the first reading at 0 field current? What is the value of generated voltage? 37. 37. And what is the maximum value of our reading in case of voltage? Or you can say, 144. what is the maximum 144, sir. value of generated voltage in our reading table? Yes, sir. Yes, 144. sir. Ji, sir. Yes. 144. Suppose we have taken here the smallest division of each millimeter is 10. Then what is the मान लीजिए अगर हम स्मॉलेस्ट डिवीजन वाई एक्सिस में एक स्मॉल जो क्वांटिटी है ये जो स्मॉल है इसका वैल्यू 10 वोल्टेज पकड़ेंगे तो कितना आएगा कितना घर चाहिए
बोलिए। हम यहाँ पर ये स्मॉलेस्ट डिवीजन कैसे बोलेंगे? What should be the smallest division for graph in x-axis and also y-axis? ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं? आयुष, आयुष, So range divided by number of division. रेंज डिवाइडेड बाय नंबर डिवीजन। ये रेंज मान लीजिए वोल्टेज के हमारे यहाँ कितना है? व्हाट इज द वोल्टेज रेंज फॉर द वोल्टेज 144? So if we take the smallest division in y-axis, say 5 voltage, then what is the number of 144 voltage here, in which box actually? कहाँ होगा ये रीडिंग 144? Box number 15, sir. मान लीजिए एक घर का वैल्यू हम 5 ले लिया, 144 कहाँ है? तो इस घर का वैल्यू कितना आएगा? एक अगर 5 लिया तो 50 हो जाएगा। हम कैसे एक्चुअली सिलेक्ट करेंगे एक स्मॉलेस्ट डिवीजन का वैल्यू कितना होगा? ये कैसे हम सिलेक्ट करेंगे? यही देखना है, क्योंकि ग्राफ को ऐसे ड्रॉ करना है कि जैसे बहुत अच्छा दिखता है, नहीं तो एक छोटा सा कोने में ये ड्रॉ कर दिया तो नहीं होगा। और करंट का वैल्यू देखिए कितना है, रेंज कितना है? 0.28। Yes, sir. 0.28. हाँ, और हमें एक्चुअली कितना प्लॉट करना है? 15 पॉइंट को प्लॉट करना है। कैसे करेंगे बोलो? स्मॉलेस्ट डिवीजन का है, कौन सा करेंगे, कैसे करेंगे बोलो? ये तो 0 0 है सब, ये बोलेंगे ये 0 0 है। फिर नेक्स्ट पॉइंट कितना होगा? बोलिए। स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना लेना है बोलो? ग्राफ पहले भी प्लॉट कर चुके हैं आप लोग, बोलिए कैसे करेंगे? So number of divisions कितना लेंगे सर? 15. नंबर नहीं, हमें कितना प्लॉट करना है? 15 प्लॉट करना है। तो मतलब Yes, sir. 15 अगर प्लॉट करेंगे तो ये देखिए, एटलीस्ट ग्राफ कितना फैल के होना चाहिए? ये एक कोने में नहीं होना चाहिए, ये पूरा
ग्राफ पेपर को लेके करना है, तो मतलब यहाँ पर 15 आना चाहिए, 15 वैल्यू यहाँ पर होना चाहिए। और इधर तो 100 डिवीजन तो लेना ही चाहिए। हम एक्चुअली देखिए ना, एक्स एक्सिस में कितना डिवीजन मिल रहा है हमें, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 मिल जाएगा। और वाई एक्सिस में 100 मिलेगा। इसे हमें लेना है 0.2, यहाँ पे इस को लेना है। तो ये कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा 0.1। ऐसे करने से चलेगा। देखिए अगर हम ऐसा वैल्यू लिया तो क्या होगा, ये ग्राफ इतना कोने में ही हो जाएगा, होगा ना आयुष? यस सर। तो एक्चुअली सर ऐसे तो 28 तक चल रहा है सर। ऐसे करके तो हमें कितना पॉइंट, नहीं एक मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 0.28। 28, लेकिन यहाँ पर तो ये बहुत छोटा हो जाएगा ग्राफ। तो ऐसे हम नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना है फिर बोलिए, कैसे करेंगे, कितना वैल्यू, चलिए हमें लिखना है इस प्लॉट, दिस द वैल्यू, what should be the value, or say what should be the scale value of y-axis as well as in x-axis। सर 0.05 लेने से सर। यहाँ पर यस सर। 0.05, then this is 0.1, then what value here 0.2, this is 0.15, zero point 0.25। चलिए ग्राफ का टाइटल भी लिखना है, पहले यहाँ पर टाइटल लिख लेते हैं। व्हाट इज द टाइटल, दिस इज ईजी वर्सेस IF graph, and one smallest division along x।
So tell me what is the value of smallest division along x-axis? Tell me. 0, sir. The smallest value in x-axis 0. Hmm? Axis is what is the value? Smallest value in x-axis is 0, sir. 0. Yes, sir. No. 0.005. This is 0 point. This is 0 point, and this is 0.05 voltage. Then tell me what is the smallest division in along x axis. एक छोटा घर का वैल्यू कितना है? एक छोटा घर का वैल्यू कितना है? 0.01. 0.01. कितना घर है यहाँ पर देखिए? हम लोग को तो वही 5 का डिवाइड मान के नहीं चलना होगा सर, तब ना हम लोग अच्छा दिखेगा. ये घर का मान कितना है? 0.05. सर 0.005 होगा सर एक घर का. तो एक घर का मान कितना होगा? 0.005. यस सर. So we can write the one smallest division along x-axis is 0.005 volt. Sorry, 0.0. Sorry, 0.005 ampere, because we are plotting field current in x-axis. So the value of smallest division along x-axis is 0.005 ampere. Now we have to select the smallest value in y-axis also. So we have to actually provide 144 voltage. So if we take 20 voltage here, suppose we are taking 20 voltage here. 20, this should be 40, this 60, this is 80, this is 100, this is 120, this is 140, this is 160. So now tell me what is the smallest division along y-axis? 1, सर 2. smallest division what is the value? सर 2 2, and unit volt. volt.
So now which point is 0? This is 0. And what should be the value of first reading? In first reading, what is the value of generated voltage? 37. 37. This is 20. This is 20. This is 30. 32. 34. 36. 37. This should be the point. And after that, the next reading is, what is the next reading? In field current, 14. in field current is 14. 0.02, Yes, sir. 0.02, and in voltage this is 48. Which Yes, one sir. is 0.02? कौन सा 0.02 है? कौन सा है? Fourth place, sir. Fourth place. Good. And the y-axis reading is 48. That means this should be the point. The next one is 0.04. 0.04. And what is the value of y-axis at that point? 56. 56. ये होना चाहिए. The next reading is 26 and 66. This one. Then what is the value? 78. The next one is 90.
इसके बाद कितना है? 96। यस सर। इसके बाद 102। इसके बाद 96 है ना? सर। उसके बाद 102। यस सर। फिर 108। 108। यस सर। उसके बाद 120। 120। नेक्स्ट 126। नेक्स्ट वन 132। नेक्स्ट पॉइंट 136। 140। और 144। देखिए ऐसा ग्राफ आया। ऐसे प्लॉट होगा। यस सर। हम अगर इसे जोड़ेंगे तो कैसा दिखेगा? ऐसा ही होगा कार्ड। और इसे थोड़ा भी चेंज कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए अब ऐसे कब जाएगा? आज समझ में कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं? आयुष, यस सर। now we have to plot critical resistance.
देखिए स्लोप यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। हाँ, हमें इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेना है। तो इसे ही हम बोलेंगे क्रिटिकल रेजिस्टेंस। इसका वैल्यू कितना होगा, देखिए कौन सा पॉइंट से ये बहुत अच्छे से जाना है। और 5 कुछ स्लाइटली टच कर रहा है। एक्चुअली ये कर्व जैसे थियोरेटिकल हमने दिखाया है ना, तो बहुत अच्छा स्लोप उठता है, ये यहाँ पर इतना अच्छा नहीं मिलता। तो चलिए यहाँ से देखिए स्लोप थोड़ा सा उठ रहा था, इसीलिए हम यहाँ से वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस का लाइन ड्रॉ कर दिया। क्योंकि ये जो देखिए ऐसे वोल्टेज कितना मिल रहा था हमें, और थोड़ा सा भी अब नज़दीक भी कर सकते थे। चलिए यहाँ से ऐसे भी हम कर सकते। देखिए कटिंग पॉइंट कितना है, वो नियर अबाउट 60 के पास पास है। द क्रॉसिंग पॉइंट OCC एंड क्रिटिकल रेजिस्टेंस का, द क्रॉसिंग पॉइंट of critical resistance and OCC. This curve is OCC. This is the curve of OCC, and this is the curve of RC. तो हमें ये स्लोप निकालना है, और वहाँ से हमें RC का वैल्यू निकाल देना है कितना है। मुझे इस पॉइंट से बहुत अच्छे से जाना because this point is A, this point is B, and this point is C. So now tell me what is the value of critical resistance? The value of RC
to the value of RC. अब slope कैसे निकलते हैं? How to determine the slope of that RC curve? We have to So take V by I. V by I. And what is the value of generated voltage at V point? That means the length of the CB, and the value of the B point is 118. And what is the value of field current of that point? Sir, 116. 116. The value of the voltage. Yes, sir. And what is the value of current at that point B? 0.09. 0. 0.09. 9. So what is the critical resistance? What is the value of that calculated? ये वैल्यू कितना है? 166, sorry, 116 divided by 116 divided by 0.09. What is the value? Calculate it and tell me what is the value. Ayush, what is the value? So IF का क्या वैल्यू? IF? करंट का, सर करंट का हाँ, current का value वोल्टेज इज कितना है? 116 एंड Voltage is 116 and the value of current is 0.09. ये वैल्यू कितना है? 1777.777. 100, 1000. 1000, Sir, 1288. 116. 1288. 88. 1288. Yes, sir. Point 8. Point 9. Oh, 0.9. So you can write Yes. it 1289. That means that this is the value of critical resistance. And in nameplate, we see that the value of field current is 0.28 and the value of say rated voltage is 2.220. That means if we add or if we supply 220 voltage and the rated current is 0.28, then tell me what is the value of field resistance. Suppose in a field we provide 220 voltage and the current flowing through that field coil is 0.28.
Then what is the value of field current? Sorry, field resistance. Tell me, we are providing the voltage of Yes, 220 and the current flowing through the field coil say 0.28. Then what is the value of field resistance? so Let the seven eighty five point seven one. 785. is equal to 7 85.81. 785. 0.71. That means 786. 786. Yes, Almost. Yes, sir. 220. This is ohm. Unit is ohm. Can we draw this uh, RF curve on that graph paper? ये क्या ये RF हम क्या ग्राफ को निकल सकते हैं? वो कौन सा पॉइंट होगा? मान लीजिए पॉइंट ये RF लाइन को हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं? आयुष, मान लीजिए ऐसा ही एक ग्राफ आएगा. आयुष, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. मान लीजिए ऐसा एक ग्राफ आएगा, वो RF अगर हम प्लॉट करेंगे तो उससे थोड़ा स्लोप कम होके एक लाइन होगा, होगा ना?
Yes, sir. लाइक ओ बी, ओ बी जो लाइन है, ऐसा ही एक लाइन होगा, होगा ना? सर ओ बी कैसे सर? ओ बी मतलब ये लाइन को बोल रहे हैं हम, ये ओ बी जो लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगा ऐसा। अगर हम, अगर आपको हम बोल दिए जे उसका स्लोप कितना है, तो वो कब आप ड्रॉ कर सकते हैं? यस सर। एक आप पहले क्या था, एक लाइन था, वहां से हम स्लोप निकाला, मतलब कितना वैल्यू है, आरसी का वैल्यू निकाला, ग्राफ से आरसी का वैल्यू निकाला ना, वोल्टेज बाई करंट करके। We have determined the value of RC from the graph. But if we provide you the value of a resistance, can you draw this line? हम अगर आपको वो रेजिस्टेंस का वैल्यू दे देंगे तो आपके वो लाइन को ड्रा कर सकते हैं? सर तो ओसीसी लाइन सर। ओसीसी लाइन नहीं, एक रेजिस्टेंस का लाइन। आप पहले आरसी जो निकाला वो कैसे निकाला, वो हमें कार्ड दे दिया था, हम वहां से आरसी डिटरमाइन कर लिया। आरसी का वैल्यू यस सर। डिटरमाइन कैसे किया हमने? सर वी बाय आई सर उस वी पॉइंट बाई का। आई ए करके वो एक वैल्यू आया आपके पास, आया ना? यस सर। उसका वैल्यू कितना आया? बोलिए। सो 1289। 1289। अगर हम आपको एक रेजिस्टेंस का वैल्यू बोल दिया, मान लीजिए 600, तो आप उससे कार्ड में निकाल सकते हैं? सर कैसा निकलेगा सर, वो सिर्फ उस पॉइंट का स्लोप निकला, तो बाकी सारा तो। हाँ, वही स्लोप भी तो एक स्ट्रेट लाइन होगा, वही तो एक लाइन होगा, रेजिस्टेंस लाइन। वो समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा? ठीक है, फिर देखते हैं कैसे होगा। मान लीजिए आपको, अगर ये यहाँ पर तो आरएफ मैंने बोला है, मान लीजिए आपको हम आरएफ का वैल्यू और भी कम प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए 400 है, ये आरएफ तो आपको ड्रा करना है। मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ आरएफ का वैल्यू 400 होगा, ठीक है? तो इस वैल्यू को हम प्लॉट करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। 400 हुआ तो मतलब 0.1 में क्या, कितना वैल्यू होगा वोल्टेज का? अगर करंट को निकालना है तो तब वोल्टेज का वैल्यू कितना होगा? आरएफ मतलब क्या हुआ? वोल्टेज बाई करंट। रेजिस्टेंस मतलब क्या? वोल्टेज बाई करंट। यस सर। तो मान लीजिए रेजिस्टेंस का वैल्यू 400 है और करंट का वैल्यू 0.1 है, तो वोल्टेज का वैल्यू कितना होगा? सर 40। 40। गुड। तो 40 मतलब ये होगा, ये वैल्यू होगा। तो अगर करंट का वैल्यू 0.2 होगा तो वोल्टेज का वैल्यू कितना होगा? 80 होगा। यस सर। ऐसा होगा, मतलब एक कार्व होगा ओरिजिन से ऐसे करके,
ऐसे करके एक कर्व होगा, होगा ना? Yes, sir. This is RF line. This is RF line. अब 786 जो आया वो भी हम कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? अभी सुनाई दे रहा है आयुष? Yes, sir. ओके। अभी वो जो कार्ड, अगर हमें वो रेजिस्टेंस, फील्ड रेजिस्टेंस बोल दिया, वो एक्चुअली नेम प्लेट में लिखा होता है कितना वोल्टेज है कितना करंट है, उससे हम आरएफ निकाल सकते हैं। Yes, sir. देन वी हैव टू ड्रॉ द आरएफ कर्व आल्सो। ऐसा ही एक ग्राफ आएगा, बोलिए। आएगा ना? आएगा कि नहीं? वो जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया वो ऐसा ही है कि नहीं? द ग्राफ I have drawn in graph paper and the model graph are similar in nature. हुआ कि नहीं, देखिए। समझ में आना ही ना है क्या आयुष? Yes, sir. वो मॉडल ग्राफ जो मैंने ग्राफ पेपर में जो ग्राफ ड्रॉ किया है और मॉडल ग्राफ क्वाइट सिमिलर है। Almost, sir. सिमिलर है ना? दीपक, जीशान, मनीष, यश, Yes, sir. Yes, sir. वो जो Yes, sir. ग्राफ मैंने ग्राफ पेपर में ड्रॉ किया और ये जो मॉडल ग्राफ है, ये सिमिलर नेचर है कि नहीं? Yes, sir. वो जो आरएफ लाइन है, मतलब जो फील्ड रेजिस्टेंस है, वो मशीन टू मशीन वैरी कर सकता है। मैंने एक 400 अगर होगा तो फील्ड रेजिस्टेंस का वैल्यू एक कर्व ड्रॉ कर दिया, वो लाइक फील्ड रेजिस्टेंस कर्व होगा। ये वो भी जैसे है ऐसे ही होगा। ये है आरएफ लाइन, होगा ना? ये सर नो? Yes, sir. Then we have to calculate the critical speed. From the nameplate we get the rated speed also। एक्चुअली नेम प्लेट में उस रेटेड स्पीड कितना है वो भी लिखा होगा। फ्रॉम द नेम प्लेट we can get the rated speed, and what is the value of critical speed? It should be the value of rated speed
And if multiplication of fraction, what is the value of the fraction? The value of fraction is CB by CA. मतलब अगर उस ग्राफ में हम देखेंगे तो कितना होगा, देखिए। ये पॉइंट और कुछ दूसरा मान लीजिए, क्योंकि वहाँ पर तो दूसरा नाम है, तो वहाँ पर नाम क्या क्या था, ये पॉइंट फोर मान लीजिए, दिस इज डी पॉइंट। सो what is the value of NC? NC should be the rated value. Suppose the rated value of speed is 1500, multiplication of the value of DC. Here the value of DC divided by the value of AC. This is sorry, AC means CB. Value should be NC is equal to rated value. The value of rated value speed is 1500, and the value of DC is near about 36. 36 divided by the value of what is the value of CB is 116. 116. Wait, 116. So tell me what is the value of that, and what is the value of that? Ayush, Ayush, Deepak, tell me what is the value of that? कितना वैल्यू हो रहा है? आयुष, एम आई ऑडिबल? सुनाई दे रहा है आपको? आयुष, दीपक? 465.5 हाँ, कितना? 465.51. 465 5.51. मतलब 6, ये आरपीएम होगा, मिनट होगा इसका आरपीएम। इसे हम निकालेंगे कितना है क्रिटिकल स्पीड। जिस व्हाट इज क्रिटिकल स्पीड एक्चुअली? मनीष, व्हाट इज कॉल्ड क्रिटिकल स्पीड? What is the definition of critical speed? Ayush, Deepak, tell me the definition of critical speed.
Asghar, yes. Anyone? What is critical speed? The speed at which it does not develops any voltage. And here the speed is 466. That means the below of 466 rpm, the generator will not develop the voltage, or say uh, below the speed of 466, the armature will not build up the voltage. हम अगर 466 के उससे नीचे अगर घुमाएंगे जनरेटर को, तो वोल्टेज नहीं क्रिएट करेगा। वो जितना रेसिडुअल मैग्नेट के लिए हो रहा है उतना ही होगा। If we rotate the DC generator below the critical speed, that means the voltage will not build up on armature, and the corresponding voltage is due to the only residual magnet. So आयुष, कैसे ये एक्सपेरिमेंट करना है अभी समझ में आया? Yes, sir. तो आपका टास्क है वो जो 786 वाला है, वो कर्व ड्रॉ करके क्रिटिकल स्पीड निकालना है इस एक्सपेरिमेंट के लिए। मैंने तो एक एग्जांपल कर दिया, वो मैंने ले लिया स्पीड, वो जो आर एफ का वैल्यू था वो 400 ले लिया था। ठीक है। सर इसका थ्योरी और वो जो मैनुअल है सर वो हाँ, ये पोस्ट सब कर ये देते। आज जो क्लास में जो हुआ है ये सब गूगल क्लासरूम में मिलेगा। ये ग्राफ पेपर और रीडिंग वो मैनुअल वो सब गूगल क्लासरूम में मिल जाएगा। ठीक है। And you have to prepare a report on that experiment, and you have to submit on Google Classroom within the next week, or you can say within the next class, next lab class. सर लैब कॉपी में करना है ना? हाँ, लैब कॉपी यू हैव टू मेक ए रिपोर्ट। और से लैब कॉपी में भी लिख सकते हो। वो जो अब तो लैब कॉपी में ही लिखते हैं। कैसे लिखते हैं कैसे? लैब कॉपी में कौन सा वो बाइंडिंग वाला करते हैं कि बुक वाला? बाइंडिंग वाला सर। वो बुक बाइंडिंग वाला करते हैं ना? यस सर। उसमें करके फिर स्कैन करके जो गूगल क्लासरूम में आपको अपलोड करना है। और at the time of examination you have to submit the copy, the hard copy, and within 1 week, or say within the next class, you have to submit the soft copy in Google Classroom. Okay. I hope you have understood what you had to done, what you have to do. I hope you have understood this. आपको क्या करना है पता चला ना? यस सर। ये गूगल क्लासरूम में आपको ये सॉफ्ट कॉपी, मतलब वो पहले प्रैक्टिकल कॉपी में लिखना है, फिर उसे स्कैन करके वो गूगल क्लासरूम में अपलोड कर देना है। मैं एक एक्चुअली वो असाइनमेंट क्रिएट कर दूंगा वहाँ पर वो सब इंडिविजुअली अपलोड कर देना। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है। यस सर। ओके। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर अटेंडेंस। मनीष। प्रेजेंट सर। यस। प्रेजेंट सर। दीपक। प्रेजेंट सर। जीशन। यस सर। आयुष। प्रेजेंट सर। असगर। यस सर।
रहीतस। प्रेजेंट सर। आपका नाम क्या है? सर रोहिताश चौधरी। रहीतास। यस सर, रोहिताश चौधरी। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है? सर मीनिंग बहुत, ये हमारे पुराण में एक ये था, सनी का, सन का नाम था सर रोहिताश। अच्छा अच्छा, रहीतास। Okay, you may leave now. That's all. That's all for today.